Hello everyone and welcome back to my playlist of microbiology. लेविंसन लेंज पब्लिकेशन वालों की माइक्रो की रिव्यू बुक हम कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 12 आज डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन बैक्टीरियल वैक्सीन्स. देखें, वैक्सीन्स आपको पता है वी यूज़ द वैक्सीन्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिसऑर्डर्स एंड इफ़ यू आर यूजिंग एनीथिंग which is able to prevent future bacterial infection, that is then known as the bacterial vaccine. And we will dive into the chapter by understanding some basic principles of bacterial vaccination. दो वर्ड्स मुझे स्पेसिफिकली आपसे डिस्कस करने हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी. ऑल दो इम्यूनोलॉजी के चैप्टर्स में ये बात हमने कर रखी है, बट दीज टू आर द क्रक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग वैक्सीनेशन और इस पे हम स्पेशल फोकस करेंगे. नाउ सेवरल बैक्टीरियल डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग इम्यूनाइजेशन दैट इंड्यूस आइदर एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी. अब एक्टिव इम्यूनिटी क्या चीज़ है? इट इज़ इंड्यूस्ड बाय वैक्सीन्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैक्टीरिया और देयर प्रोडक्ट्स. दिस चैप्टर presents a summary of type of vaccines. Detailed information regarding each vaccine is located in the chapter on the specific organism. So this will be a very generalized chapter जहां आपको सारे vaccines के नाम, bacterial vaccines के नाम बताए जाएंगे, उनकी composition बताई जाएगी. So अब तक क्या बात समझ में आई about the active immunity that it is induced by vaccines which are prepared from bacteria or their product. Yani if this is the whole bacteria, maybe a small portion of the bacteria is utilized for generation or production of vaccine, or the whole bacteria में से कोई भी part. So bacterial product से vaccine बन रही है. However, what is the passive immunity is provided by administration of pre-formed antibodies in the preparations which are known as immunoglobulins. देखो, ये दोनों बहुत ही basic और बहुत ही important terminologies हैं, so we cannot just miss around understanding these terms. So I will spend a few more minutes on there. So suppose this is a person A and we will compare this person versus comparison का जो दूसरा बंदा है that is person B. इस बंदे को हम एक बैक्टीरियल प्रोडक्ट से एक हमने मॉलिक्यूल तैयार किया एंड दैट इज व्हाट वी कॉल द वैक्सीन. अब ये वैक्सीन हमने इस बंदे की बॉडी में एंटर कर दी एंड नाउ द पर्सन इज मेकिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर वैक्सीन जो हमने डाली है. ठीक है, अब ये जो एंटीबॉडीज बनी है, दिस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी मतलब पावर, एंटीबॉडीज मतलब डिफेंस मैकेनिज्म. सो आइंदा अगर कभी ये बैक्टीरिया ओरिजिनली इस बॉडी में एंटर होगा यानी इन्फेक्शन करने की कोशिश करेगा तो नहीं कर सकेगा बिकॉज द एंटीबॉडीज आर ऑलरेडी देयर. And who made the antibodies? This person made the antibody. Why this person made the antibodies? अभी इन्फेक्शन हुआ भी नहीं था, उससे पहले एंटीबॉडीज कैसे बना ली इसने? बिकॉज आपने उसको वैक्सीन दी थी, आपने उसको इस बैक्टीरिया का एक छोटा सा पोर्शन इन अ फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट दिखा दिया था कि भाई ये चीज़ आप में एंटर हम कर रहे हैं, तो आप इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये पावरफुल आर्मी तैयार कर लो ताकि फ्यूचर में अगर कभी एक्टिव बैक्टीरिया आ जाए तो वो आपको डैमेज ना कर सके बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द एंटीबॉडीज फॉर्म्ड. ओके, सो कार्डिनल फीचर्स क्या हैं इस पर्सन ए के? नंबर 1, इसमें आपने जो वैक्सीन एंटर की है दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ बैक्टीरियल प्रोडक्ट. नंबर 2, एंटीबॉडीज कौन बना रहा है? खुद बंदा बना रहा है. द एंटीबॉडीज आर प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन जिसको आपने वैक्सीनेट किया है. दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स. अब इसको आप, सो दैट टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज नोन एज एक्टिव इम्यूनाइजेशन. द वे आई रिमेंबर दिस इज the fact that the person is actively making the antibodies against the vaccine so that the future infection can be prevented. Active immunization. अच्छा, passive immunization में क्या करते हैं कि आप लेबोरेटरी के अंदर there is a scientist who is on the bench making the antibodies. ये जो antibodies हैं ये लैब में बनती हैं और prepared antibodies इसमें एंटर की जाती हैं. So अब ये जो बंदा है, the person is a lazy person and the person is not making the antibodies for himself or herself. So antibodies इस केस में कहाँ बन रही हैं? Inside the laboratory. That is a very important point. So the person is not actively making antibodies. Such immunization, अच्छा, अब इससे भी फायदा तो होगा obviously because what you are injecting into the person is the antibody. Antibody जो खुद बनाए तो क्या ही बात है, बाहर से लेकर के आए तब भी वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कॉम्बैट तो करेगा. सो नाउ द बैक्टीरिया इज इन द बॉडी बट द एंटीबॉडीज आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. द पर्सन इज नॉट मेकिंग द एंटीबॉडीज. दिस इज व्हाट वी कॉल पैसिव इम्यूनाइजेशन. सो दीज आर द 2 मेन कैटेगरीज ऑफ immunization. And this sort of immunization जिसमें आप एंटीबॉडीज प्रिपेयर डाल रहे हैं, इन एंटीबॉडीज को हम दूसरा नाम भी देते हैं immunoglobulin. So either you call them immunoglobulin or antibodies is the same thing. Okay. Now, the immunoglobulins useful against the bacterial disease are described later. Passive-active immunity involves giving both the immunoglobulins as well as a vaccine to provide long-term protection. Now, this approach is described. Obviously,
इसकी हम फर्दर डिटेल्स देखेंगे, बट आई मीन बाय द लुक ऑफ इट, सी जो चीज़ आप खुद बनाते हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और बड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है. सो एक्टिव इम्यूनिटी इज ऑब्वियसली अ वेरी गुड इम्यूनिटी टू हैव, बट देयर आर ऑब्वियसली सर्टन कंडीशंस वेयर यू हैव टू यूज पैसिव इम्यूनिटी. ओके, right, carrying this discussion forward, what are the routine bacterial vaccines that we use? So we have and there will be different categories. We'll talk about them, and actually we'll come back to this table later on. इस टेबल की तरफ चैप्टर के एंड में आएंगे, पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर ये समझ में आसानी से आ जाएगा. ठीक है. So let's start reading about capsular polysaccharide vaccines. So what do basically they mean? Both versions of the vaccines against Streptococcus pneumoniae contain capsular polysaccharide of the bacteria as an immunogen. देखो, immunogen का मतलब होता है वो part of the bacteria जिसको अगर body में डालें तो body उसके against antibodies generate करे. So for example, this is your body and here we have this bacteria. अगर ये पूरा लाइव इंटैक्ट बैक्टीरिया बॉडी में डाल देंगे तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन हो जाएगा, एंड दैट्स समथिंग दैट वी डोंट वांट. सो वैक्सीन प्रोटेक्शन इस तरह होती है कि एक पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया, से फॉर एग्जांपल स्मॉल पार्ट ऑफ द सेल वॉल, कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड, इसको लेकर लेबोरेटरी में प्रोसेस करके बॉडी में एंटर किया जाता है. अब जब ये बॉडी में एंटर करेंगे तो बॉडी विल परसीव दिस स्मॉल पोर्शन as if it was directly coming from the bacteria, and the body will take this as a challenge कि जी रियल में शायद बैक्टीरियल अटैक हो गया है, and your antibody formation will begin. So you will start making antibodies. Okay, now because this small portion is able to, inside the antibody formation, it's able to start the antibody formation. This small portion is known as immunogen. So anything which can actually activate the immune system to make antibodies is known as immunogen. अब obviously हमें वैक्सीन प्रोडक्शन में immunogen कोई ऐसा पार्ट अगर हम डाल दें जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन को अप स्केल ना करे तो फिर ये तो इसका डालने का कोई फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि एंटीबॉडीज ही नहीं बन रही. तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गेटिंग दिस यूज्ड एज अ वैक्सीन? सो immunogen के तौर पे कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड. वन वर्जन कंटेन्स कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड ऑफ 23 मोस्ट प्रिवेलेंट सीरोटाइप्स, यानी जो 23 डिफरेंट तरह के स्ट्रैप नेमोनिया के वेरिएंट्स अवेलेबल हैं उनके कैप्सुलर रीजन को रिप्रेजेंट करता है. सो इफ यू यूज वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेरिएंट, you are covered by in large against almost 23 organisms. It is recommended for persons older than 60 years of age and adult patients of any age with such chronic disease as diabetes, cirrhosis, or splenectomy. Old age, this is the variant which is recommended. There is a second version of the vaccine which contains capsular polysaccharide of 13 pneumococcal serotypes coupled to carrier proteins, is available for protecting the young children. So age specific किस organism की vaccine use करनी है उसकी काफ़ी सारी guidelines अब available है. A potential problem regarding the use of pneumococcal vaccine is that of serotype replacement. Will the vaccine reduce the incidence of disease caused by serotypes in the vaccine? Not over. Now that's an important point. So for example, each and every bacteria, so this is a bacteria for example, and this bacteria comes in, say for example, 5 different flavors. So that is a bacteria. They're all same bacteria, but their immunogens are different from each other, and this is what we call the variants of a bacteria. तो इसका जीनोटाइप फिनोटाइप अलग हो सकता है, इसका अलग हो सकता है, इसका अलग हो सकता है. So अगर आप इस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं तो ये बंदा इसी वेरिएंट के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड है, इस वेरिएंट के अगेंस्ट वो प्रोटेक्टेड नहीं है, एंड दैट्स व्हाट इज अ मेजर प्रॉब्लम. हमने अभी कोविड में भी देखा व्हाट हैपेंड इन कोविड, कि कोविड में डिफरेंट स्ट्रेन्स आती गई है ना, और हम कहते रहे यार ये तो फिर इन्फेक्शन. रीजन यही है कि जो वैक्सीन बनी है इट इज कवरिंग अस फ्रॉम एन स्पेसिफिक वेरिएंट ऑफ कोविड, नॉट ऑल द वेरिएंट्स ऑफ कोविड. ओके, इम्यूनोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीरोटाइप रिप्लेसमेंट इज एन इंपॉर्टेंट फिनोमेना यू हैव टू बेयर इन माइंड. इसीलिए अगर आप यूके में देखें या यूएस में, सो फ्लू वैक्सीन्स लगती हैं हर साल, और ये जो फ्लू वैक्सीन्स का जैब लगता है वो हर साल चेंज भी होता रहता है, बिकॉज डिफरेंट फ्लू वायरसेस के स्ट्रेन्स रिपोर्ट होते रहते हैं फ्रॉम WHO. ओके, राइट. सो देयर आर मोर देन a dozen serotype of Neisseria meningitis, for example. You see, more than 12 different variants that are classified according to the capsular polysaccharide, serotype A, B, and C, W, and Y. They are the main primary causes of meningococcal disease throughout the world. तो अगर इन्हीं को भी कवर कर लिया जाए, you prevent a lot of cases. In the United States, 2 quadrivalent meningococcal polysaccharide vaccines conjugated to either diphtheria toxoid or tetanus toxoid are available. The crux of this paragraph again is the fact that there are different variants, and the major variants are the ones that we cover.
Until recently, efforts to develop vaccine against serogroup B strains were unsuccessful because the capsule of that serogroup is composed of a polysaccharide that is also found on the surface of many host tissues. Now, that is a problem. See, if this is a bacteria and you are picking up an immunogen, a part of the capsule from the bacteria, and make an vaccine out of it, and suppose this region mimic in sequence, because this will be a protein probably, and if this protein, this immunogen is homologous to the sequence of any part of the host, say for example cartilage का एक protein region है जिसके साथ mimic करता है, now that is a problem because your antibodies that you develop will also attack your cartilage. So that sort of things have been reported. Okay. Then Haemophilus influenza vaccine contains type B polysaccharide conjugated to diphtheroid toxin. So these are the carrier proteins. So it's basically the vaccine molecule carried by some other carrier protein. It is given to children between the ages of 2 and 15 months, the capsule of polysaccharide. So all these examples that we have been discussing, also again Salmonella typhi, they are all the examples where what is being used as an immunogen, a part of the capsular polysaccharide structure. So this is the bacteria, there must be a capsule, a part of the capsule is taken as an immunogen, and a vaccine is produced out of that capsular sequence. Okay, ये सारी examples जितनी अभी हमने discuss की हैं, including Salmonella, meningococci, and all those sort of things. Then there is another category which is known as toxoid vaccine. Now, Corynebacterium diphtheria, for example, Clostridium and Bordetella pertussis. These vaccines contain toxoid. Now, formaldehyde treated exotoxin. These bacteria anyways produce exotoxin. और अगर इस exotoxin को collect करके you treat in the laboratory with formaldehyde, then you can use it as a vaccine. Immunization against diphtheria is indicated while this is the indication for the drug, but that's the concept of a toxoid vaccine. You take a toxin out of them, treat them, inactivate them, put in the patient. बिल्कुल इसी तरह से क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई में भी जो एक्सोटॉक्सिन है उसको फॉर्मल्डिहाइड ट्रीट करते हैं. एंड बॉर्डेटेला pertussis contains pertussis toxoid but includes other proteins as well. So either you take apart from the capsule, और एक बैक्टीरिया में एक टॉक्सिन नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है. ऑब्वियसली ये नेचुरल टॉक्सिन अगर बॉडी में जाएगा तो डिजीज कॉज करेगा, बट व्हाट इफ यू यूज दैट टॉक्सिन, inactivate the toxin by treating it with formaldehyde and now put it in the patient. So now it's a different story. Okay. Another category of vaccine is the purified protein vaccine. और इसके एग्जाम्पल्स में भी आई मीन ऑल्सो इंक्लूडिंग बर्डिटला pertussis, which was also एक उसकी कैटेगरी वैक्सीन टॉक्सोइड भी है, एक प्रोटीन वैक्सीन भी है, प्यूरिफाइड प्रोटीन. Bacillus anthracis, Neisseria meningitis. So these are some of the examples where we use purified protein. So there are two types of Bordetella pertussis vaccines: an acellular vaccine containing purified protein and a vaccine containing the whole kill bacteria. So अब यहाँ concept ये है, what was the concept here toxoid vaccine का, कि एक bacteria में से you take the toxin that the bacteria is anyways producing and convert it into something inactive by treating with formaldehyde. Here you extract some other protein, not necessarily the toxin, but you take any protein, sometimes even the whole bacteria. Okay. Then similarly with the Bacillus anthracis, you can use the protective antigen purified from the organism and put it in the patient. Not patient at the moment because you are using vaccine. So the person is probably healthy and you are trying to prevent future infection. All right. Then next category is called live attenuated bacterial vaccine. Now this is also an important category of vaccination because in this category, you see the bacteria are live, but they are attenuated. The vaccine against tuberculosis, for example, contains a live attenuated strain of Mycobacterium bovis and Bacillus calmette-guerin, BCG. So they contain live but attenuated, यानी सही से काम नहीं करता, मरा हुआ टेढ़ा मेढ़ा सा bacteria that enters in the body and activates the immune system. Okay, it is recommended for children at high risk for. So कई countries में ये नहीं होती इसकी vaccination. For example, US में, UK में, I mean US UK में उनके जो inborn बच्चे होते हैं उनकी नहीं होती. But if you are in there and you are of Asian origin, for example, then you will be vaccinated. One of the vaccine against typhoid fever contains live
attenuated Salmonella typhi strain. The vaccine against tularemia also contains live bacteria, and oral live attenuated cholera vaccine is also used in the US for travelers. So point is, ab ye table should start making sense to you. So if you look at the table now, you see, so there are current bacterial vaccines that we use against the organism. Now you know this word toxoid, you know what is acellular, so these are purified protein, no cell, but apne bacterial cell mein se proteins purify kar liye hain, and you are putting those proteins in the patient. You know what is the meaning of capsule or polysaccharide. So organism का नाम कौन सी disease करता है, what type of vaccine is used, live organism. So see, now you start making sense out of it. Then another category is the killed bacterial vaccine. So Vibrio cholera में use होती है, for example, Yersinia, Rickettsia, and Q fever. They are all killed bacteria. So you take the bacteria, kill the bacteria, put the bacteria in the patient. ये जितनी भी हमने categories करी हैं, they were all the active immunization, because इस सब में what you are doing is you are putting up the vaccine. अब वो vaccine किसी भी तरह की हो सकती है. It can be a capsular vaccine, it can be a killed bacteria, live bacteria, whatever. But you put the vaccine in the person, and the person starts making the antibodies. So antibodies are produced within the person. But there are cases where I told you use pre-formed, पहले से बनी हुई antibodies inject करते हैं. So say for example in tetanus, in botulinum, in diphtheria, these are all the examples where you inject pre-formed antibodies. Okay, so remember all these important categories, very very important. They are all passive immunization. Then waning immunity to vaccines, the duration of the protection provided by the vaccine can decline. Obviously आपने अगर आज immunization की है, if there is a person, tetanus की example ले लें, for example, there is a person or there is a dirty wound, उसको road पे traffic accident हुआ या something like that, and you are suspecting कि यार इसको Clostridium tetani exposure हो गया है. So what you do is you use pre-formed antibodies. ये सारी जिंदगी के लिए इनफ नहीं है. देखो भाई, एंटीबॉडीज जो हैं या जो वैक्सीन्स हैं, दे हैव अ लाइफ. एंटीबॉडीज भी फॉर एग्जांपल, आई मीन यू गो विद दिस 4 to 6 months ऑफ लाइफ. इसी तरह वैक्सीन्स की लाइफ होती है. इसीलिए वी यूज दिस वर्ड द बूस्टर डोज, यानी हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको दोबारा एक एंटीबॉडी का शॉट लेना पड़ता है ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्टअप हो जाए. कोविड में आई मीन यू एक्सपीरियंस दिस ऑल. आपको एक शॉट लगा, फिर कुछ अर्से बाद दूसरा, फिर बूस्टर डोजेस. सो बूस्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो एंटीबॉडीज की जो इफेक्टिविटी है, it wanes, it goes away. Okay, so that's all basically about this chapter. Generalized concept, these charts are very important to remember. कि कौन कौन सी टाइप्स हैं डिफरेंट वैक्सीन्स की, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स की. इट्स अ लॉट ऑफ मेमोरी थिंग, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. सो फॉर एग्जांपल, यू शुड नो व्हाट इज अ किल्ड ऑर्गेनिज्म, यू शुड नो व्हाट इज अ लाइव ऑर्गेनिज्म, यू शुड नो व्हाट इज अ कैप्सुलर वैक्सीन. अच्छा, फिर जो सेकंड डिस्कशन का मुद्दा है इस चैप्टर में, वो एक्चुअली इस चैप्टर में हमने नहीं डिस्कस करना कि कौन सी एज ग्रुप में कौन सी वैक्सीन रेकमेंडेड है. सो दैट्स नॉट द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. वो फिर हम जब इम्यूनाइजेशंस फर्दर पढ़ेंगे तब ये बात करेंगे. बट फॉर नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी डिफरेंट वैक्सीन अवेलेबल है, क्या क्या टाइप्स होती हैं, क्या क्या कैटेगरीज हैं, एंड एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या चीज़ है. ओके, सो दिस पर्टिकुलर चैप्टर फॉर एग्जाम्पल deals with the general concepts, not exactly कि कौन सी vaccines traveler के लिए important है, कौन सी vaccines young age group के लिए important है, because it's not the scope. Although यहाँ charts दिए हुए हैं, but I don't recommend worrying about these charts for now, because हम ये detail में discuss करेंगे कि जब मैंने जो कोका है obviously पढ़ेंगे तो इसकी vaccination की सारी details उस chapter में करेंगे. So for this chapter, this is all. Take care of yourself. I'll see you in another video soon.